तो तो हमें देखें, एक इदारे को दूसरे इदारे की इज्जत करना चाहिए। यकीनन मेरे ख्याल में पार्लियामान ने सुप्रीम कोर्ट की इज्जत की और रखी कि भाई ये कानून तो हमने बना दिया है, मगर इसमें आपको उस तरह से मैंडेटरी में पाबंद नहीं किया है। अब आप की भी दानिश है, आप लोगों की अकल और सोच है, आप देखेंगे कैसे चलता है। हो सकता है इसके अलावा भी रूल्स बनाने की ज़रूरत पड़े। तो वो मेरे ख्याल में अगर हर चीज़ का हम आज ही जवाब दे दें तो कल हमारे पास जो केसेस आ जाएंगे, एक्चुअल केसेस, तो वो फिर तो हम पाबंद होंगे अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन पे। पे। रूल्स के अंदर आपने ये एक्नॉलेज और रिकग्नाइज किया हुआ है। ऑर्डर 11 बिगिंस विद बाय सेइंग सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय लॉ, तो ये आपकी एक्नॉलेजमेंट है फुल कोर्ट की उन रूल्स के अंदर कि अगर कानून कुछ कह रहा है तो आप उसको व्हाट्स द रिस्पांस ऑफ द फेडरेशन, ऑफिशियल रिस्पांस ऑफ द फेडरेशन? यू आर द चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ द फेडरेशन. The question that I just asked you. What's your official response to that? My lord, if the Supreme Court chooses not to follow the law or not to bring its rule in line with the law, will it not be a violation of the We will pray. violation of oath? your oath actually requires you to act in accordance with the Constitution and the law. So I think we would be going into that territory. Mr. Attorney General, please read para 2, section 2, subsection 2 of this act. Yes, Ji, sir. Soon after commencement of this act, the committee constituted under subsection 1 shall hold its first meeting to determine its procedure, including... Ji. Procedure still has to be framed by the committee in view of the full court, because all matters are mentioned in section 2. My lord, कमेटी ने मेरी दानिश में प्रोसीजर तो कमेटी ही बनाएगी ना। कमेटी ने मेरी दानिश में, पहले बात सुन लें। माय लॉर्ड, आप मेरी भी जरा सुनेंगे तो मैं जरा बात एक्सप्लेन कर सकूंगा। कमेटी ने मेरी दानिश में, क्योंकि सवाल मैंने समझ लिया था, कमेटी ने ये नहीं करना कि बाकी प्रोसीजर को टच करना है। कमेटी ने ये करना है कि हमने मिलना कब है, जुमे को मिलना है, हफ्ते को मिलना है, कॉज लिस्ट बनानी है, किस कैटेगरी के केसेस कहाँ जाने हैं। दिस इज टू माय माइंड व्हाट द कमिटी इज रूल्स में भी यही कुछ है और क्या है रूल्स में? यही कुछ है। रूल्स में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बता दीजिएगा ये प्रोसीजर जो है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस प्रोसीजर इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कमिटी और द सुप्रीम कोर्ट। कमिटी सर, कमेटी ने फंक्शन करना है। इट्स मोर देन वन पीपल हु आर गोइंग टू मीट, सो दे वांट टू वर्क आउट देयर सुप्रीम कोर्ट टू डिटरमिन इट्स मीटिंग्स, इट्स बेंचेस। सो वो जो आप देखिए, अब देखिए वी आर एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ द चैलेंज। द स्कोप ऑफ द चैलेंज इज दैट दिस law is unconstitutional. Now we are going into how we will interpret, and I don't want to observe anything in the whichever judgment is delivered, how, if the law is upheld, how it is to be. That is up to, at the relevant time, appropriate body, whether it's a full court, whether it's a committee. We will certainly not accept or even consider what you say. We will determine that ourselves. So let's not go into uncharted waters. Simply an attack has been launched on the act on its basis of its constitutionality, how it will work, whether it's functional, whether it's unworkable. It may require additional input from the committee or from the full court, are matters which I don't think we want to hear even from you, because we're not asking assistance. If a problem arises in a case, it may come, we may issue you notice under Order 27 to come and please assist us on that score. So let's restrict the scope of this thing. And I think the fundamental point जो हम लोग बार बार भूल जाते हैं, वो दुनिया जो है ना, वो एक दूसरे के साथ मिलकर चलती है, एंटेगनिस्टिक नहीं चलती है। ये जो पार्लियामान है हमारी दुश्मन नहीं है, और यकीनन पार्लियामान हमें नहीं समझती हम उनके दुश्मन हैं। तो दोनों को साथ भी हम चला सकते हैं कि नहीं मेरा इख्तियार और तुम्हारा इख्तियार। ये दुनिया चलती है ना, उनके बड़े बड़े इश्यूज हैं, क्लाइमेट चेंज हैं, लोगों के हकूक़ हैं, हम इस बारीकियों में फंस गए, क्या क्या हो रहा है दुनिया में, और दुनिया आगे जा रही है और हम लोग बस इस ऐसी बाहर बहसों में पड़े हुए हैं। हम एक दूसरे की कदर, हम क्यों उनको मनफी तरीके से देखें? हम कह सकते हैं हाँ आपने कानून नेगेटिव इम्प्लीकेशन दें कि आपने गलत किया, भाई शुरू तो करें इस बात से कि आपने सही किया है। हाँ इसमें कोई गैर आईनी बात है वो हम देख लेंगे, उसको यहाँ तक ख़त्म कर दें। तो इतना हमें
लड़ाने की कोशिश ना करें एक इदारे को दूसरे इदारे से। मैं तो कहता हूँ, अंग्रेजी में पता नहीं उर्दू में कैसे कहेंगे, लिव एंड लेट लिव। और That's अब what the इसकी बस हम Constitution देख लेते हैं, demands. कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी देखना है, बस That's इतनी what the सी बात है। Constitution also अब हम वो demands. इंटरप्रिटेशन हम लोग कैसे करेंगे भाई, हमारी मर्जी है, अब वो वक्त आएगा कर लेंगे इंटरप्रिटेशन। थोड़ी बहुत अकल समझ है, 40 साल से ज़्यादा वाबस्तगी है कानून से, कुछ ना कुछ समझ आ गई है, तो अब हर चीज़ हम लिख दें कि ये मसला आएगा तो हम यूँ करेंगे और ये मसला आएगा तो यूँ करेंगे, तो फिर तो ना कमेटी की अहमियत रही और ना वो फुल कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे उसकी अहमियत रही, क्योंकि अब फुल कोर्ट का जजमेंट आ जाएगा। फिर तो बिल्कुल आपने हमें पाबंद कर दिया और हमें स्ट्रेट जैकेट में डाल दिया। उधर हमें ना ले जाइए, आप सिर्फ फोकस रखिए आइन पे जो अटैक हुआ है। My lord. Grateful. My lord, now to constitutional conventions, if I may begin my submission on that. My lord, my respectful submission is that our constitution in its text does not recognize any convention. It does recognize customs or usages having force of law, but not the conventions. And I say this because conventions in historical sense, Article 8. Article 8, Clause 2, and then Article 203B in Federal Sharia Court is Clause C, which also uses the phrase customs or using having force of law. I'll come to that in due course. What are those customs or usages which have force of law? I refer to a statute of 1872. My lord, the conventions are a feature of an unwritten constitution, which is that of the United Kingdom. It is acknowledged by the English courts that the constitution, the conventions may be, the reasons for having those conventions or acting upon those conventions may be so strong that not acting upon them might elicit response from the people. But the conventions by themselves do not abridge the parliament's power to legislate to the contrary. And if so done, the courts cannot hold them unconstitutional. I will, there are two judgments to the contrary what I am submitting. In Al-Jihad Trust case, this court held that they do attain a status of law and are enforceable by the courts. And in Malik Asad, they go a step further and say that conventions established over a period of time have the same status as that of a constitutional provision. My lords, and with the benefit of addressing the full court and those judgments not having the binding effect, if I may take your lordships to the critique of the two judgments by late Justice Fazil Karim in his book titled Judicial Review of Public Actions, Second Review, Volume 1. I'll place the copies before you, lordship. Judicial review of Public Actions. What edition is there? My lord, this is second edition. I think he was one of the finest writers of Pakistan law. What? Each book is, I've always gained a lot from reading Justice Fazil Absolutely. Karim's Absolutely. books. Volume and Page 95. This is volume 1, my lord, page 95. I placed photocopies of the relevant pages for your lordship. Page 95. His skill was to explain complicated things simply. Absolutely. 95. 95 now towards the bottom, my lord. The last paragraph, but I'd start with the last, the second sentence. It was settled. Page 95, sir. last line. Ji, last line. 95, last line. It was settled in Federation of Pakistan versus United Sugar Mills Limited, PLD 1997, Supreme Court 397, that the expression law means positive law, that is to say, a formal pronouncement of the